I am Naresh Kumar from Sonbarsa, Sitamarhi. I am going to a special chapter. Its name is Indian Civilization and Culture, जो कि हम 12th क्लास की अंग्रेजी में पढ़ते हैं. इसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको महात्मा गांधी के द्वारा कंपोज किया गया है. इस इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का ओवरऑल थॉट यह है कि महात्मा गांधी जी जो एक राइटर थे, एक समाज सेवी थे, साथ ही साथ बैरिस्टर भी थे, और उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे वर्क किए हैं. और लगभग उनकी ही इस योगदान के कारण आज हम लोग इस स्वतंत्र दुनिया में अपने आप को आगे की ओर ले जा रहे हैं. हमारा देश उनकी पद चिन्हों पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है. तो बच्चों, हम लोग आज हमारी जो टॉपिक है वह है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. इसको हम लोग 3 क्वेश्चन के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमारी सभ्यता किसी अन्य सभ्यता से बेहतर थी, कैसे हमारी सभ्यता किसी अन्य सभ्यता से कमज़ोर थी. इन्हीं चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे. VVI मैंने अपने स्तर से यहाँ पर 3 क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है. फर्स्टली, आई थिंक दैट इफ वी कंप्लीट 3 VVI questions of this lesson, then we can easily crack this lesson and clear our best performance by the help of 3 important questions. पहली क्वेश्चन है, while Indian civilization is respected all over the world according to महात्मा गांधी. पहला क्वेश्चन यह बताने की कोशिश कर रहा है कि while Indian civilization is respected all over the world, क्यों भारतीय सभ्यता पूरी दुनिया में अच्छी सभ्यता है, सम्मानित सभ्यता है महात्मा गांधी के अनुसार. We reply its answers in this way. Indian civilization is one of the oldest civilization of the world. In the theme of Mahatma Gandhi tried to understand that we have to difference between the Indian civilization and the urban civilization. Gandhi ji also tried to focus why our rituals, why our superstitions not very useful to us to regard it much more better civilization of the world. So firstly we have to think according to Mahatma Gandhi tried to take the proper situation of the village, proper situation of the urban areas. So according to Mahatma Gandhi always tried to give his experience that we must have to follow the ecosystem of the village, follow the basic cultures of the village. That is why we can grow up our health issue and much more things from this lesson. Our another question, why rural people more satisfied than urban people? महात्मा गांधी जी इस दूसरे प्रश्न का के आधार पर वो कहना चाहते हैं कि रूरल जो लोग हैं वह ज़्यादा संतुष्ट है शहरी लोगों की अपेक्षा. इसका आंसर हम दे सकते हैं महात्मा गांधी definition between the rural and the urban people in this way. Rural people have limited dimensions of life, but they have much more potential power to improve himself in any aspects of the life. But urban people have limitless desire. They always try to get much more. That is why Gandhi ji focused. We have to get the opinion about the basic cultures of the rural people. So I think that Mahatma Gandhi's idea is much better than any other writers. I agree this question.
Our third question is, how can we improve the education of our country according to गांधी जी? गांधी जी के अनुसार कैसे हम अपने शैक्षणिक स्तर को बढ़ा सकते हैं, इसमें सुधार कर सकते हैं? This question answer must be Gandhi ji focused some special topic, just like we have to get the proper education, proper medical facilities, and proper ecosystem of the village which is appropriate for us. So we can say that Mahatma Gandhi especially focused on the activities of the people, because rural people have a lot of potential power, a lot of energy, because his health is better than the urban people. So I think that Mahatma Gandhi try to inspire much more questions from this lesson. I hope that this is real truth of the village, real face of the country, real growth of our India. So I think that these three important questions must be considered. So let's the children complete it. Thank you. God bless you.